Hello everyone and welcome back to our channel once again. This is Alice and I'm back with yet another informative news video for all of you. So हमने काफ़ी सारे colleges के placement reports के बारे में बात किया है. So आज हम जिस college के बारे में बात कर रहे हैं वो है SIBM पुणे. SIBM Pune does offer a number of specializations and it is one of the top private colleges that you can go for. SIBM Pune ka campus is something which is really amazing, but here we're not about to discuss the campus, but their placement reports. So let's quickly have a look without wasting any further time. So a quick overview, SIBM Pune ने recently अपना final placement complete किया है for the MBA flagship batch of 2019-2021. तो इस बार इतना पैंडेमिक होने के बाद भी so like what the other colleges have done, SIBM पुणे ने भी same modes adopt किए हैं. उन्होंने एक strong student driven culture, structure, academic rigor और firm corporate engagement module से ट्राई किया इंश्योर करने का कि उनके स्टूडेंट को एक्सीलेंस मिले और उन्होंने दे मैनेज टू बैक द टॉप एंड प्रीमियम रोल्स फॉर द इंस्टीट्यूट एज वेल. सो जो पूरा प्रोसेस था उन्होंने भी वर्चुअली कंडक्ट किया और मोर देन 100 ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्टिसिपेट किया इन द प्लेसमेंट प्रोसेस इंक्लूडिंग अलग अलग सेक्टर्स जैसे कि ऑटोमोबाइल, BFSI, कंसल्टिंग, FMCG, FMCD, हेल्थ केयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और मोर देन 180 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया इन द प्लेसमेंट प्रोसेस. सो अगर हम की स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो हाईएस्ट CTC जो इस बार इंश्योर हुई है वो है 30.38 lakhs per annum. एवरेज ओवरऑल CTC जो है वो है 19.56 lakhs per annum. एवरेज CTC टॉप 50 ऑफर्स के लिए 27.11 lakh per annum. Average CTC for top 100 offers stood at 24.12 lakhs per annum. Average CTC for top 150 offers stood at 21.3 lakhs per annum. और जो उनकी मीडियन CTC है दैट स्टूड एट 18 lakhs per annum. अगर एवरेज CTC की बात करें फीमेल स्टूडेंट्स के लिए सो वो है आपकी 20.28 lakhs per annum, जबकि मेल स्टूडेंट्स के लिए सेम फिगर स्टूड एट 19.22 lakhs per annum. अगर हम पिछले कुछ सालों में कंपेयर करें तो इस बार का जो हाईएस्ट CTC है दैट हैज कम डाउन फ्रॉम द लास्ट ईयर और एवरेज CTC हैज आल्सो कम डाउन स्लाइटली including the median CTC. Average CTC top 100 offers के लिए थोड़ा सा राइज हुआ है, बाकी figures have slightly come down from the last year. की हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो more than 180 students ने participate किया in the final placement process. Top more than 100 recruiters participate किए थे प्रोसेस में. Total 192 offers हैंड आउट हुए थे और बैच को 66 PPOs भी रिसीव हुए थे. स्टूडेंट्स को कुछ एलीट रोल्स ऑफर हुए थे थ्रू आउट द कंट्री. अब अगर हम सेक्टर वाइज ब्रेकडाउन की बात करें तो ऑटोमोटिव और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वी हैड सो आई हैव अ लिस्ट ऑफ सम कंपनीज हु केम ऑन कैंपस. So companies like SAR Group, SKF Group, Tata Steel Limited, Tata Power Limited, Royal Enfield, JCB India, Whirlpool India, Vedanta Limited, Bajaj Auto Limited, Cummins India Limited were a few companies who came on campus for their automotive and manufacturing roles. Healthcare में we had companies like ACG Capsules, Philips Healthcare, Bharat Serums and Vaccines, Thermo Fisher Scientific, GlaxoSmith, Glenmark, Indigene, Becton Dickinson and company who came on campus. Next, FMCG or FMCD में we have companies like Abinbev, PepsiCo India, Pidilite Industries, Adidas, Asian Paints, Tata Consumer Products,
Cargill, ITC, Marico Limited, Mother Dairy, MTR who came on campus. Conglomerates में we had companies like Adani, Aditya Birla Group, Reliance Industries and Mahindra who came on campus. Next, BFSI में we had companies like Bank of America, Cleartax, HDFC, Society General, IDFC First Bank, HSBC, ICICI Bank, Credit Suisse Limited. So mix of investment banks as well as private banks who came on campus and other insurance companies, SBI Capital Markets who came on campus this year formed the BFSI sector. Consulting and IT key, which companies who came on campus were Capgemini India, Google India Limited, Wipro Limited, Xiaomi Technology, Egon Zender, Sears Consulting, PwC, Infosys, Mindtree, Tech Mahindra Limited, Bristlecone India, Cisco. So these were the few companies who came on campus. So I hope you found this video informative. हमने detail में discuss किया about their high CTC, their average CTCs, median CTCs across the various sectors. हमने sector wise breakup देखा of the recruiters who came on campus as well. And detail में discuss किया comparing the trends from the previous 3 years as well, that how did SIBM Pune actually perform in the process. So I hope आपको ये video अच्छा लगा हो. If you found this video informative, please do share the link and like the link. This gives us motivation to create more content for you. अगर आपको कोई भी queries है, you can drop it in the comment section and we shall get back to you on all of them, solving out your queries. If you're new to our channel, please subscribe to our channel and hit the bell notification icon ताकि जब भी हम ऐसे interesting news videos लेके आए, you don't miss out on anything. तो I hope you all are taking very good care of yourselves. Hope to see you all again soon. Please take care of yourselves. Keep doing well. Stay safe, stay healthy. Thank you so much.